जो हमारे भी था, हम भी घुसे मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कि भाई यहाँ तो डबल करके निकलेंगे एंड बस वही 6 महीने में मर्सिडीज, 1 साल में हेलीकॉप्टर, ये सब MLM वाले सपने में सोच रखे सारे। वही व्हेन यू एंटर स्टॉक मार्केट तुम एरोगेंट होते हो। तो ब्लैक स्वान एक दिन आता है, ट्रेडर कमाता रहेगा 1-1.5 साल तक पैसा, एक ब्लैक स्वान विल टेक अवे एवरीथिंग। एक शारिया कंप्लायंस के म्यूचुअल फंड्स होते हैं दैट इफ समबडी वांट्स टू फॉलो द शारिया लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग वो कर सकता है। अब डिड यू नो अबाउट दिस? नोबडी जनरली नोज अबाउट दिस। तो मैंने एक वीडियो बना दी दैट व्हाट इज शारिया लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग। भाई साहब कमेंट बॉक्स में तो एंटी नेशनल बना दिया मुझे वहाँ पे। आई थिंक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स डेमोक्रेटाइज स्टॉक मार्केट यार। पहले तो जो न्यूज़ चैनल्स है, आप समझ से दिखा दो मार्केट्स वहाँ से, आई विल चेंज माय नेम। आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ के मुझे दिखा कभी दो। समझ नहीं आया। स्टॉक मार्केट्स ना बाहर से सुपर सेक्सी, सुपर ग्लैमराइज्ड। रियलिटी इज इट्स एज चैलेंजिंग एज एनी अदर करियर। सो जो भी आपको समझ आता है, जस्ट इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर। First up, tell me who these two guys are that they are looking at. What have you guys studies? Why should they be listening to you? Okay, so I'll tell you a story in very short. My name is Harsh Goela. He's Aditya Goela. Both of us are brothers. I'm 92 born. He's 94 born. We come from decent families, middle class families, right? No debt or a Santro and Hindi woodwork. In 2010, when my school finished, I haven't gone to college. So, bachpan se hi, I want to be in stock markets. Our aspiration, we want to be counted in the Forbes top 50 investors of the world. We want when you take names of Buffett, Howard Marks, Peter Lynch, गोयला का नाम आना चाहिए वहाँ पे. And that's it. तब से so I didn't go to college, graduation and MBA all through open college. Or we worked under a broker, then we worked under a bank. Then after 2014, we started training for BSc and NSC and Tier B and Tier 3 cities for financial literacy. And then after which हमें लगा खुद ही कर लेते हैं, तो we started Goela School of Finance where we help and train people for long-term investments and how to build their portfolio. Throughout the process, from our academics point of view, we of course graduated from DPS Noida. Then we went to the open route. Harsh did his graduation and post-grad both from open. I did my graduation from open and I did my CFA after that. So that was a good experience. So this is our academics background. Did you guys ever think that that's going to be a limitation in your lives? That probably you're doing it from distance, probably you're not doing it the way people perceive education to be, like the formal education that happens, and later on लोग आपको serious नहीं ले लेंगे, ये सब कभी दिमाग में आया? मतलब 2010 was a time when college dropout was not cool, right? तो your mama, chachas, all good-hearted, and they go to dad and like क्या पैसे नहीं है क्या college भेजने के? What are you doing? And my mom used to get FOMO. You know, my cousin is going to Australia, somebody is going to Mumbai. तो क्या रे तुम कुछ नहीं कर रहे, वो नहीं हो रहा. And we used to prep before going to family functions कि अच्छा ये बोलना हम ये करते हैं. तो and it was really a nightmare to go to these things. But हाँ बाद में वही चीज़ें inspiration बन गई. तो the reason I think we stuck to it because एक तो we were brothers, we were very clear. दूसरा our dad placed a lot of confidence in us in stock markets. और वो भी stock market कि stock market में जब जाते हैं हमें लगता है कि इसके वजह कुछ काम मिला नहीं होगा, नौकरी नहीं मिली होगी, इसलिए markets में investing trading कर रहा है. So yeah, so अब when things have turned out well for us, so now we are inspiration in our family. So आप जब ट्रेडिंग कर रहे थे, what was the spike that you saw that made you feel like अच्छा ठीक है, पैसा तो इसी में है, इसी में पैसे बन जाएंगे, probably this I'm going to earn more than probably मेरा जो classmates हैं जो अभी बहुत सारे ऐसे अच्छे schools में जाके पढ़ाई कर रहे हैं. This started with the concept of compounding. I'm sure everyone has heard of it, right? But again, हम schools में पढ़ते हैं, but उसको realize करना took time. And once you actually realize the power of compounding, you're like, if I have this much investment, if I invest it properly, I can make much, much more than what I can really work or let's say go for a job and do it. So that was the route we took. And slowly and steadily through the work, we just happened to build up Goela School of Finance throughout the process. इसमें ना just want to add कि people lot of times they don't, जब किसी बोलते हैं स्टॉक मार्केट में बोलते अच्छा तो हर रोज पैसे छाप रहे होगे टाइप्स, राइट? दैट इज नॉट द सिचुएशन. पीपल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये अलग बॉल गेम्स हैं. जो हमारे भी था, हम भी घुसे मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कि भाई यहाँ तो डबल करके निकलेंगे
एंड बस वही 6 महीने में मर्सिडीज, 1 साल में हेलीकॉप्टर, ये सब जो MLM वाले सपने में सोच रखे सारे। वो ये व्हेन यू एंटर स्टॉक मार्केट तुम एरोगेंट होते हो, तुम तो ये इतना आसान है, बस ये बाय सेल स्टॉप लॉस क्या है ये, मतलब एंड एवरीवन गोस थ्रू द स्टेज नो मैटर व्हेनेवर यू एंटर मार्केट्स। बट वो 6 महीने मार्केट्स औकात दिखा देता है, राइट? तो द थिंग इज मार्केट्स में व्हाट आई रियलाइज, रियलिटी में पैसा ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। यू माइट थिंक अच्छा मेरा फ्रेंड ट्रेडिंग से, अरे ही इज अर्निंग अ लॉट, अरे माय फ्रेंड का फ्रेंड इज अर्निंग अ लॉट। लॉन्ग टर्म में इट्स बीन मोर देन डेकेड फॉर अस। मैंने किसी भी हमने ट्रेडर को देखा ही नहीं अभी तक टिकते हुए। It's the same story कि लोग बोलते हैं ना क्रिप्टो में बहुत पैसा कमाया मैंने। Right. It's the same story. सो पैसा कहाँ गवाया सबसे ज़्यादा व्हेन यू आर फर्स्ट स्टार्टिंग? आप लोगों को बहुत थोड़ी आइडिया थी इसके बारे में, एंड देन यू गाइज वेर ऑल्सो लर्निंग इन द प्रोसेस। एक तो बहुत ज़्यादा पैसा कब बनाया, व्हाट वाज दैट टाइम एंड हाउ मच वाज इट, और व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड देन थॉट दैट प्रॉब्ली देयर इज अ साइंस बिहाइंड ट्रेडिंग ऑल्सो दैट यू नीड टू लर्न? आई टुक 25,000 फॉर माई डैड। तो जब मेरा ड्रॉप हुआ वो स्कूल के बाद, आदित्य 1-1.5 साल बाद आया था, तो आई टुक 25,000 फ्रॉम डैड। बोला कॉलेज फीस है, कॉलेज फीस समझ के आप दे दो। ही गिव इट टू मी। तो स्टार्टिंग में तो आई यूज्ड टू बाय ओनली दोस पेनी स्टॉक्स, यू नो, एंड दैट टाइम पेनी स्टॉक्स यू कुड फाइंड अराउंड 2010, 30, 35, 40। थोड़ा कंटेक्चुअलाइज कर देते हैं, पेनी स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स मतलब एकदम सस्ते कंपनीज, छोटी कंपनीज, लाइक पेनी स्टॉक्स विद वेरी लेस वैल्यू इन देम। मैं तो उसे उसमें ही करता था। उस समय स्टॉक ब्रोकर्स डिडंट यूज्ड टू बी ऑनलाइन। उस समय स्टॉक ब्रोकर ऑफिस होता था, बड़ा एक्साइटिंग होता था कि जाओ तो लाइन से कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहाँ डीलर्स बैठे हैं, टक टक टक, पीछे रिटायर्ड बिजनेसमैन है, नॉट रिटायर्ड आर्मी मैन, कोई पॉलिटिक्स की बातें कर रहा है, कोई बिजनेस की बातें। तो उस समय डीलर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस होता था। तो वहाँ पे मैं डीलर थे एक अमन भैया, एंड आई वॉज 18, ही वॉज 27-30, एंड होता है ना तुम्हारे लिए कूल डूड बन जाता है एक वो 27 साल का। ही यूज्ड टू टेल मी डू फ्यूचर ऑप्शंस, अरे ये क्या है, बस घुमा दो, ये कर दो। एंड उस समय फेसबुक ग्रुप्स वर अ थिंग। तो जो भी 25,000 थे, आई ही गॉट मी रैप्ड अप इन आई थिंक 3-4 months। एंड बाद में आई रियलाइज दैट मैं नुकसान से ज़्यादा, पता हूँ बड़ा नुकसान क्या था, आई पेड मोर इन ब्रोकरेज। सो वही पीटर लिंच बोलते हैं ना दैट अ स्टॉक ब्रोकर विल ओनली लीव दैट मच मनी विद यू सो दैट यू कैन पे हिज ब्रोकरेज। दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी। फिर 2013 में फंडामेंटल से शुगर सेक्टर में वी डिड वेरी वेल। तो sugar sector was one place जहाँ पे we got multi-baggers. Now, what is multi-baggers? That is any stock which gives you more than 100% return. तो तब actually we got real confidence कि यार this is something we can build on. But again, like stock markets, you always go up and down. तो उसके बाद again एक हादसा हुआ with DLF. Yeah. तो this time we were like यार dude, we're fully educated. DHFL भी। हाँ, वो भी बात की कहानी है, वो होता है ऐसा। तो DLF में we were like technical, we know everything, we know the chart, we know the candlesticks, moving average, everything is sorted. Let's go for it. हमने अच्छा खासा, everything is looking perfect, we put in money, we're hoping for the best. 3 दिन में DLF lost a certain case in Gurgaon कि they had taken a certain plot from villagers and it was at a steal price or whatever. The share price went down 30% that day. कितना पैसा लूज किया आप लोगों ने उससे? See, वो तो यानी ऐसे एब्सोल्यूट नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं था। इट वाज आई थिंक इट मतलब हम साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे थे, तो आई थिंक कितना होगा 76-74 ऐसी कुछ था शायद। हाँ, correct. बट फॉर दस इट वाज ह्यूज अमाउंट यार, मतलब हमारे तो बहुत बड़ा अमाउंट था। Huge amount. And the point is that we realized one thing कि trading में उस time there is that one thing called black swan, right? तो black swan एक दिन आता है, trader कमाता रहेगा 1-1.5 साल तक पैसा, एक black swan will take away everything. So that's the volatility that we are talking about when you're talking about this particular Yeah, space. that's the risk, that's the uncertainty. And when did you guys realize, again, as I mentioned, that you need to understand the science behind it? उसके लिए क्या करना पड़ता है? If somebody is starting right now, एक तो वो आपका गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस का कंटेंट दिखेगा 100% YouTube channel subscribe. for them to understand कि how to go about it. But in general, क्या करना चाहिए? What is the starting point for them? We all have heard about compounding. It took us 5 minutes to read compounding. It took us 5 years to actually realize it, understand the value of it. जो मैं बोलता हूँ, you should Shark Tank देखा है सबने यहाँ पे, right? Be a shark. जब एक कंपनी आती है तो वो पूछेगा कि क्या ROI है, इंडस्ट्री क्या है, कंपटीशन क्या है. That's it. जैसे आप you are a shark, जो कंपनीज आपके सामने आ रही हैं, you just need to ask them simple questions. और अगर तुम्हें बेसिक धंधा समझ आ रही है, invest in it, you will end up making money in it. And this is not us saying it. This is some of the greatest investors saying this, and they are echoing the same thing. आपको बिजनेस समझ आना चाहिए. जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स,
कहने को स्पेशलिटी केमिकल्स एक इंडस्ट्री, बट उसमें इतनी सारी जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, फिर दिलीप केमिकल्स हो गया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर है, मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड. सो इफ आई इन्वेस्ट इन इट, मैं वैसे भी उसमें पैसे नहीं कमाता कभी. आई वुड प्रेफर सेक्टर दैट आई अंडरस्टैंड. आई लाइक बैंकिंग, आई लाइक सम पीपल लाइक ऑटोमोबाइल, और सिंपल सेक्टर लाइक एफएमसीजी. किसी को एआई समझ नहीं आ रहा है तो टाटा एलेक्सी में इन्वेस्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है. सो माई ओनली एडवाइस वुड बी लाइक, इसको एकदम सिंपल लो, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट. स्टॉक मार्केट इज द सिंपलेस्ट थिंग, एंड बी अ शार्क. जैसे शार्क टैंक में हम सब जजमेंट करके बैठ जाते हैं एक कंपनी चलेगी नहीं चलेगी. विद दैट इटसेल्फ, इफ यू जस्ट स्टिक टू गुड कंपनीज, it has extremely high probability that things will work out. You've done your CFA as well. Does this help in any way for people to make good decisions? See, CFA, what it is aiming is to create a full portfolio of a certain company or a person. What does a portfolio mean? It's basically a group of assets. Let's say I have equity, FD, land, whatever. Right? तो CFA से क्या होता है कि it gives you the right perspective, I feel. That trader perspective, which was there, CFA actually kind of clearly opposed it. They like कि trading में ultimately you don't get money. In short, in indirect words, they just say this only. And they focus all on investing. So that gives you a little perspective. But in practical world, real time world, I don't think कि CFA has made me a better investor. It just gave me a perspective. Let's talk about your creating journey. ऐसा कब लगा that now हम लोगों ने गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस बना तो लिया है. एक तो गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस मतलब it seems like you're running your own B school somewhere. Yeah, तो, okay. Somebody was also asking us, yes. Yeah, I mean, what was the brainchild कैसे हुआ वो कैसे शुरू किया आपने? What was the content journey like? How did it all start? The reason we named it Goila is because इसमें we thought कि हम ऐसा क्या रखें जिसमें गूगल में सबसे पहले हम आ जाएं. एंड वी रियलाइज कि हमारा नाम हर्ष गोयला आदित्य गोयला, राइट. स्कूल में सब गोयला बुला रहे हैं, हमारे कजन सब गोयला बुलाते हैं, और गोयला कुछ है ही नहीं, इंटरनेट में कुछ है ही नहीं. तो वी डिड गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, वी वन. अब गोयला बटर चिकन आ गया, वो कंपटीशन दे रहा है थोड़ा सा. बट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड कंटेंट जर्नी हमने पहले ना यूट्यूब में 2014 में स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाई थी. एंड दैट वॉज द टाइम ऑफ TVF AIB, आई डोंट नो हाउ आप में से तो. हाँ, जब उस समय अगर किसी को सब्सक्राइब करने को बोलते अच्छा लॉग इन करना पड़ेगा यूट्यूब पे, तो उस लेवल पे होता था. एंड वी वर मोर इनटू ट्रेनिंग, गो टू कॉलेजेस, गोइंग टू अदर सिटीज. फिर कोविड के बाद व्हेन यू हैड लॉट ऑफ टाइम, देन वी स्टार्टेड टेकिंग कंटेंट क्रिएशन वेरी सीरियसली. तब उसके बाद से आई थिंक वी वर वेरी कंसिस्टेंट, राइट. And what is the kind of content that you guys put up? Do you know, a lot of content creators, why they make content is because they want to create distribution for the products that they want to sell on top of it. Is this the model that you guys are also working on? Was it something that you thought would work out for you, or it's just plain content that you guys are creating right now? Ultimately, it started off with plain content. I mean, in 2014, when we posted the video, it was just a fact that we would understand few concepts, we would keep them in YouTube, and probably in future when we need to remind ourselves those concepts, we would just rewatch it. But over time, we realized that YouTube became a good marketing platform, and now over time, it came to the word called distribution. Now it's a good distribution platform. So yeah, it does definitely help. But the intention of starting off was not just this only. So you guys do recommend people the kind of stocks that they should be investing in, or the kind of investments they should be making, or the asset allocation that should be there. I'm assuming that's the primarily the content that you guys started creating, right? No. That for that you need a RI, which is a SEBI registration. So all we do is just to help people educate them. That's it. That's all. That's our entire motive into it. And yes, we are actually still in the crossroads if we want to go into wealth management or not. That's what we're thinking. But the original idea is that I'll show you. I'll break down the research for you. So suppose for 2024, right? You read the IMF report. There's a Fitch report, and then Ministry of Finance की report आई है that how do they predict India economy आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी. So what we do for aim for content, take those reports, break it down to very very simple things, and then hopefully from there the viewer, he starts reading himself, and he can then make an informed decision according to whatever he's read. Now the conversation might get a little in the tricky water or the muddled waters a little bit, and you can choose not to answer, but my job is to ask you these questions, and I will ask you this. Any suggestion that you probably have made, or any videos that you have made, or any reels that you probably have put out, telling people that probably this is going to be helpful for you, and or this is something that you should be investing in or thinking about,
which is tanked really bad and backfired. And you have gotten a lot of hate because of that, because you have played with the money of a lot of people. Fortunately, not that much, but one thing that happened, and I think my parents also got a lot of really scared. There's a genre of investing, ठीक है, पैसे डालने का स्टाइल होता है, called Sharia law of investing. What we did, there are एक Sharia compliance के mutual funds होते हैं, that if somebody wants to follow the Sharia law of investing, वो कर सकता है. अब did you know about this? Nobody generally knows about this. तो मैंने एक वीडियो बना दी, that what is Sharia law of investing. भाई साहब, कमेंट बॉक्स में तो एंटी नेशनल बना दिया मुझे वहाँ पे. एंड माई पेरेंट्स वो लाइक वेरी स्कैर्ड एंड वेरी अपसेट एंड बंद कर दो ये सब. एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट सिचुएशंस गेट, राइट, जहाँ पे वी वर जस्ट टॉकिंग ऑन व्हाट जॉनर ऑफ दिस इज ऑल्सो जॉनर ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट. एक वो था. दूसरा एक ये था दैट आई थिंक दिस वॉज विच IPO, दिस वॉज अ मैनकाइंड IPO विच दिस ईयर इटसेल्फ. तो इफ यू लुक एट द प्रोबेबिलिटी, अगर इसको IPO के लिए अप्लाई करना है, तो अगर लिस्टिंग डे गेन देखना, उसके बड़ी दो सिंपल रूल होते हैं और प्रोबेबिलिटी आपकी साइड होती है कि शुड बी 10 टाइम्स ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम शुड बी अबव 30%. थोड़ा टेक्निकल है बट 30% ऊपर. एक वीडियो में मैंने ये बोला था दैट अगर ये 3 बजे तक, अगर जब ये बंद हो रहा है डे 3 पे, अगर ये होता है तो यू कैन कंसिडर कि प्रोबेबिलिटी इज विद यू. आई थिंक उसको मैंने ठीक से टर्म नहीं किया था, ये नहीं किया था. देन पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग कि बिकॉज ऑफ यू आई डिडंट अप्लाई, यू थिंक यू डिडंट हैव द क्लियर मैसेज. एंड एक्चुअली दैट वाज माय फॉल्ट. आई थिंक माय मैसेजिंग शुड हैव बीन मच क्लियरर. सो उसके लिए तो वी एक्चुअली अपॉलोजाइज ऑल्सो. अदरवाइज तो नॉट थिंग, हमारा रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, तो वी डोंट डू because we don't recommend actually stocks now. So Yeah. this kind of a thing does not happen with us. And I saw one thing which is I don't know whether it's a later addition or you guys always had it. You mentioned in your Instagram account that you're not SEBI registered, yes, right? yes. Has that happened because the regulations came in with a heavy hand to a lot of creators saying that they have to be SEBI registered to give the kind of information that they're providing? Right. Or is it something that you have been following for a long time? And how do you see that space to be in India in general with respect to the content that is being created by the finance content creators? So we actually, of course, put it after all this SEBI thing, SEBI regulation coming in. The reason being is that we want to make it absolutely clear who we are. We don't want to misrepresent ourselves, right? Because many people think that from far off we advise or we give tips and all, which probably other people do who are doing the same thing as us. We want to make it clear. That is why we put it up right there. Anything you want to add? And on yeah, this? see, the entire SEBI situation, no, it was very much needed, right? But I think it's been misrepresented. I don't think it's fair at all. I'll tell you why. Because whenever you talk about the finance content creators, right, you take a couple of names, which I think all of us know, those couple of names, and we say, "Acha, the entire thing is like this and that." If by this logic, Franklin Templeton had an issue in 2019, then now can I say all AMCs are, all mutual funds are? I can show you so many problems there were with the regulatory bodies also, the exchanges also, and all registered. First, you can't stereotype. Second, I think finance content creators are democratized stock market यार. पहले तो जो न्यूज़ चैनल्स है, आप समझ से दिखा दो मार्केट्स वहाँ से. I'll change my name. आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ के मुझे दिखा कभी दो. समझ नहीं आया. I think the entire community democratized stock markets. But again, when they were doing very well, definitely there are elements that really ruin the thing for the entire people. But at the same time, यार लोगों का भी issue है. Because people only want tips. And that's the sad part. And even अब जैसे if I show research, and this is one challenge that I'm facing, research हमने दिखाया, उसको लोग टिप ले लेंगे. They won't do research by themselves. And no matter the amount of disclaimers I give, no matter मैं पूरा बोल दूँ उसमें 10 मिनट की वीडियो में 5 मिनट बोलूँ please do research, people also want tips. So it needs to be worked from both sides. You can't just, because if there is a demand for such things, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की सप्लाई कर ही देगा. So it's a growing thing. We are getting better, but it'll take us a bit more time to reach there. There people realize it. Do you think the supply is more than what the demand is right now, or do you think there's an The equilibrium? demand is huge. I think supply is still lesser. Still lesser. If I think a content creator with a decent following, even a following of 100, 200K, right? And if it's illegal, but if he happens to come out and say, I'm going to give you finance tips, I can assure you he'll cross his revenue 1 crore a month. Easy. Easy. That's what people want. And I think this is part of education. People now are slowly, steadily realizing. जैसे अभी भी होता है कि ट्रेडिंग, अरे ट्रेडिंग बेस्ट है, ट्रेडिंग वो है, मेरा दोस्त ट्रेडर रिच है, those assumptions. Stock markets ना बाहर से super sexy, it's super glamorized.
reality is it's as challenging as any other career. How challenging is it for you guys? So, what is the business model now for you guys? Because you guys are working, I'm hoping it's full time that you guys are Right, working right, on right. it. And you guys probably are trading as well right now as part of your daily, Very little, only very 5 to little. 10% barely. So, two gentlemen in their late 20s, I assume. How are you guys making profits out of the brand that you have built for yourself? All right. So what we have is our main thing is the course. So we really believe that if we can get on to a person and we can actually educate him how the markets work and what is the right strategy to invest in, because it's very simple actually. You just need to make the other person realize, and to make the other person realize, you need attention from that guy, right, for some time. And the best thing we realize is that it's not through free videos, because a person who's come on for free, he probably won't give much time at all. You need to create a paid audience so that you can actually influence them in the right direction. So that is what we do through Google School of Finance. So we have series of workshops, we have series of master classes, webinars, courses, and through that we actually generate the revenue. Sorry, help me understand a bit. What is a paid audience that you just mentioned? Workshops, webinars, courses. Those are the paid audiences. Is it something that I mentioned before that because you're creating Goila School of Finance, it's creating a distribution for you, and through that you're kind of marketing your services or products that you have created, right? Yes. And that's the audience you're talking about. Yes, yes. I'll tell you the logic behind it. We didn't leave college to teach stock markets to people. Reason we came into this line since 2014, training people, because we realized that सबसे पहले, if we want to reach the top 50 investors of the world, पैसे चाहिए to invest in the markets. We don't come from super rich family backgrounds की आए 25 लाख पापा ने दे दिए और फिर ये सब ऐसा यहाँ पे नहीं है. We found out a way. It's a win-win situation. People who have lower experience, less experience than us in stock markets, they come to us. Obviously, it's a win situation for us. We get income which we invest in markets to achieve our long-term goals, and a win for that person because he's being trained by someone जिसको stock markets कुछ भी नहीं आता. हम तो पूरे टाइम stock markets हैं, and that's the basic idea of Gola School of Finance. And अब GSF को लेके हमारा target ये कि यार at least we want 1 lakh successful investors by 2030. तो जैसे आफ्टर द कोर्स व्हाट वी डू, इट्स अ 3 month प्रोग्राम, राइट. तो वी हैव अ ट्रैकर कि हमारे प्रोग्राम के 3 महीने बाद कितने लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं. इट इज़ अ मेट्रिक फॉर जो हमने अभी ले रखा है, तो पता तो चले कि भाई इफेक्टिव है भी कि नहीं है. तो अभी एज ऑफ नाउ 63 पॉइंट क्या था, 63 पॉइंट समथिंग ऐसी कुछ फिगर था, विच इज आई फील इज वेरी डिसेंट. आई डोंट नो इंडस्ट्री एवरेज क्या. So we just trying to do that better. I have one more question, and you can choose to answer it the way you want to. I would appreciate that if you can share some figures. If somebody is trying to build a business similar to yours, somebody who is good at in investments or trading or Right, or any other something skill. that you are doing, and they are creating a content platform for themselves, and they are selling courses like yours, what is the opportunity that is looking right now, and how much can they be making? So as of now, I feel opportunity definitely here. Simple as that. As Harsh said, there is a lot of demand. Only 2% of people invest in the world. In India, there is a lot further to go. In US, there are about 40% people who invest. So there's a great ground to cover up. And if any person starts off, let's say he starts off with content creation, then has some workshops, assuming, right? So every person is coming from a different background. Every person is coming from a different starting point, right? And the people who relate to that person from the starting point will be the ones who will really like to see whatever he's created. Why? Because Right. the overall concept and all is generally the same. It's the way how a person tells it to you, right? So just we were just talking about something ki, why does not our driver invest? And we're making videos, why does he not invest? And then we realize that if we make videos, he will never be inspired by us. If one of his colleagues who was probably a driver once and he started content creation in stocks, he will relate to him and he'll start investing. Yeah. So opportunity to boss है yeah, definitely, undoubtedly. And इसमें I like to add कि during 2020, no, Paul, it was like a mad rush. Oh, it was crazy, right? So we were in that because we were in this game since quite some while. 2019, I think we had set our online CRMs and everything. Without obviously, we had no idea what's going to happen. 2020 में तो आप कुछ भी बना के बेच दो, बिक जाएगा टाइप्स, राइट? वो तो उस टाइम का था कि कुछ भी बेच दो, कुछ भी. Now there is still demand. I won't deny there's no demand.
But audience is much smarter now. They know what to choose. They are not just going to buy any BS program that you offer. This they're pretty smart, and I think even Google and Meta ads, they've really improved. पहले तो था that any type of ad was approved. Now they are very strict on what can you show on an ad. You can't show that, you know, it shouldn't be a MLM bound ad. You cannot have a politically inclined ad. लोग क्या करते थे पहले, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की फोटो डाल दी एंड एड में डाल दिया यू डबल योर मनी ट्रिपल योर मनी, एंड ऑफ कोर्स इट वाज टेलीग्राम टिप समथिंग लाइक दैट. And people actually thought कि राकेश झुंझुनवाला का एक टेलीग्राम ग्रुप है. Yeah. और people actually bought it. Yeah, Rakesh Jhanjwala ka Telegram group. So this is the level of unawareness, and I'm talking about metros. So yeah, so it's a long way to go. Scope बहुत अभी भी if somebody wants to do it बहुत इसमें scope है, but audience is smarter. They know what they want now. The entire MLM BT that is happening right now on the internet, have you guys ever faced that same kind of a suspicion from your audience कि यार आप लोग MLM वाले हो क्या? नहीं, मतलब हम तो रेफरल है ही नहीं कुछ. नहीं है. उल्टा वी हैव टू, हम तो बोलते हैं कुछ रेफरल शुरू करते हैं, कुछ यू नो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कम हो, बट वी डोंट हैव अ रेफरल एज ऑफ नाउ. So who's your target audience? So because why I'm asking this is because 20-22 साल के बच्चे, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं. They can't invest They are not the in a audience. lot They are of not the right audience. things. So आपकी ऑडियंस के हिसाब से जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, do you think your age in mind or the content that is reaching to the people उनका age in mind? या पहले तो आई वॉज वेरी अनक्लियर टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो पहले तो ये होता था दैट वी आर ट्राइंग टू टैप इनटू एवरीथिंग टू गेट मोर आई बॉल्स. बट फिर सोशल मीडिया से यू अंडरस्टैंड विच पीपल लाइक योर कंटेंट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली द पीपल हु बॉट योर पेड प्रोग्राम, एंड जो मैं आपको बता रहा था वीड सी द मेट्रिक, उनकी एज ग्रुप वी सॉ इट्स 29. बिफोर 25 अ पर्सन डज नॉट नेसेसरली हैव द मेच्योरिटी दैट इन्वेस्ट. उसको लगता है भाई जल्दी पैसा ट्रेडिंग. तो 29 इज अ एज जिनके लिए हम स्पेसिफिकली कंटेंट बनाते हैं. पीपल हु आर अर्ली इन करियर्स एंड अर्ली इन मैरिज, दोज काइंड ऑफ पीपल. I'm going to open the house for audience questions. Hi, sir. Dhruv this side. See, over 7,000 stocks are listed, including BSE and NSE both. So, what are the parameters through which you find out your few drops from that ocean? Okay, so I'll tell you my filtration process. तो पहले तो what we do is that we choose companies market capital above 7,000 crores, है ना. penny stocks हटाओ, बिकॉज ये बड़ा मिथ है कि 10 रुपए का स्टॉक है तभी 1,000 रुपए तक पहुंचेगा. एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी थी, अब 2 को पार कर चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट. तो हमें पैसे कमाने, सस्ते महंगे स्टॉक से फर्क नहीं पड़ता. पहला, मार्केट कैपिटल शुड बी मोर देन 7,000 crores. सेकंड, आई वुड पुट सेल्स ग्रोथ शुड बी मोर देन 15%. ये इसलिए बिकॉज अब प्रोडक्ट अच्छा है तो हर साल तो प्रोडक्ट ज़्यादा ही बिकेगा ना. अब आई कांट ट्राई एंड टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एवरी कंपनी. तो अगर हर साल फॉर द पास्ट 10 years का सेल्स ग्रोथ 15% से बढ़ रहा है, इट्स गुड. फिर ROE एंड ROCE भी मैं लूँगा 15% के ऊपर. ये टेक्निकल थोड़े टर्म्स आ जाएंगे जिसमें मतलब सिंपल गूगल में आपको मिल जाएंगे कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कैपिटल डाला उसमें प्रॉफिटेबल है. एंड मेन करूँगा डेट इक्विटी, कंपनी में कितनी उधारी है, शुड बी लेस देन 0.5. मतलब इट्स जनरली सेट कि बुक वैल्यू, बुक के हिसाब से 1 से नीचे इज गुड. वी प्रेफर 0.5 के नीचे. 0.5 basically means that 50% of the capital, I mean, loan is 50% or less in the full market cap. So ऐसे the probability becomes very higher. This is Hi. Vanshika. So basically, I have a question. Like, as being a fresher, we guys are not much more about of stock market and all. So where we should supposed to invest, like in SIP, share market, that we can also grow there. First, tell me your age. I'm 19 years old. You're 19 years old, Yeah. right? So, stock market में why do we put money? मतलब what is the intention? Basically, we want to grow your money. Correct. You want to grow your money, right? तो इसको और simplify करते हैं ROI. We're looking for ROI. अगर मैं if I put in 100 rupees, how much do I get? As of now, if you're 19, no, it is best to invest in yourself, because right now, let's say you get some skill, the ROI you will get throughout your lifetime because you have time and energy will be much more right now. So first is to make sure you have the skill, upskill yourself, invest in them. Once Right. that is done, then go for stock market. Stock markets में क्या है? Let's say कि मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा, मैं क्या करूँ उसका? So that should be the strategy. And if you are in that situation, कि if you're in the situation, the best is to start off a simple investment in mutual fund, index funds. Right. Simple SIP which you can maintain in the extremely bad times and extremely good times also. Just make sure you maintain it for a long period of time, and that is the easiest way to make great wealth. Right. And I think Vanshika, great advice would be that जो आपको समझ आए,
है ना, कोई ऐसे कोई मामा चाचा ऐसी स्ट्रैटेजी बता दी है जो भाई सब समझ नहीं आ रही, Yes, उसमें yes. नहीं जाना है, राइट? जो बिजनेस आपको नहीं समझ आए, इंडेक्स में समझ आए, एंड दैट्स इट. अगर वो लॉजिकली आपको समझ आएगा ना, यू विल हैव द कन्विक्शन टू होल्ड इट. स्टॉक मार्केट्स में इस CFA में आदित्य बता रहा था दैट द थिंग इज कि इफ यू आर स्टे लॉन्ग इनफ इन एनी बिजनेस और एनी स्किल, यू विल टेंड टू बी एक्सीलेंट एट इट. सेम इन बिजनेस, अगर आपने कोई भी ढंग का बिजनेस भी उठा लिया, इंडिया में इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है यार, मतलब आउट ऑफ 24 सेक्टर्स वी हैव, राइट? जैसे FMCG, ऑटोमोबाइल, NBFCs, फार्मा, एवरी सेक्टर यू स्टडी अबाउट ना, मतलब मुंह में पानी लग जाता है कि भाई घर बेचो, सारे पैसे डाल दो इसमें इतनी ग्रोथ ऑफ, इट्स सो, वी आर, आई कांट टेल यू हाउ लकी वी आर कि हर रोज सुन रहे हैं कि भाई यहाँ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. सो जो भी आपको समझ आता है, जस्ट इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर. जैसे सम पीपल आर वेरी मच इनटू कार्स, तो दे लाइक, जैसे महिंद्रा उनको बड़ा पसंद है, टाटा मोटर्स पसंद है, इन्वेस्ट इनटू दो सेक्टर्स. दैट्स इट. कीप इट वेरी सिंपल एंड रॉ. That's it. All right. I think we have to draw close to this particular event. Thank you very much, guys, for taking our time and talking to us about your journey and the kind of place that you are building. I hope that आपकी top 50 वाली journey successful हो. I hope that you get what you have desired and dreamt for.